In this lecture, we will discuss problem based on analytic function. So different types of problem we will discuss here. So we start the problem 1. For what value of z the function fz is equal to u plus iota v defined by the following equation cease to be analytic. Cease to be analytic. ओके हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा दैट में रुक जाना, एनालिटिक नहीं होना। ओके, so now we do the solution of this problem following equation. The equation is given as z is equal to e raised to the power minus v cos u plus iota sin u. So we do the solution of this problem. So basically we divided this problem in two parts. So this is the first problem. So we do the solution of first problem. अब फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। अब हमें ये देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z, so here we obtain the value of z when function is cease to be analytic, that means function is not analytic. Now we write down as given that fz z is equal to e raised to the power minus v of cos u plus iota sin u. तो cos u प्लस आयोटा साइन यू ई रेज टू द पावर आई यू, डिवाइमर थ्योरम से हम क्या लिखते हैं इसे, cos u प्लस आयोटा साइन यू। ये हम यूज किया हमने डी मोइवर्स थ्योरम। नाउ अब इस केस के लिए यहाँ पे जब डिमोइवर्स से अप्लाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर माइनस वी और इनटू ई रेज टू द पावर आयोटा यू। नाउ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी और प्लस आयोटा यू। अब जो -1 है मीन्स जो आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो जो माइनस साइन है उसके प्लेस पर वी कैन राइट डाउन एज आयोटा स्क्वायर इंटू वी और प्लस आयोटा इंटू यू। तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर आयोटा हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट आया यू आ जाएगा, यू और प्लस आयोटा वी। क्लियर। अब डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ जेड होता है, और एफ जेड इक्वल टू क्या होता है यू प्लस आयोटा वी। तो यू प्लस आयोटा वी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे डब्ल्यू। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन को शो करती है डेरिवेटिव को, एफ डैश जेड, और एफ डैश जेड क्या होता है हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विच इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन एनालिटिक के लिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी है, जेड की वैल्यू है। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि डेरिवेटिव से वी कैन चेक दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, और डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन एनालिटिक होगा तो किस पॉइंट पे होगा, नहीं होगा। नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे, W कैलकुलेट करेंगे। तो W कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो वी राइट डाउन एज टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग लेंगे तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग ई एंड रेज टू द पावर आयोटा डब्ल्यू, और लॉग ई क्या हो जाएगा हमारा 1। तो लॉग ई 1 हो जाएगा, लॉग है एक एंटी लॉग है तो दैट विल बी 1। तो दिस गिव्स अस लॉग जेड, और लॉग जेड इक्वल टू
आयोटा डब्लू। तो यहाँ से जो डब्लू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/आयोटा इंटू लॉग जेड, और 1/आयोटा इंटू लॉग जेड। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, मीन्स डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, क्या हो जाएगी, लॉग जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/जेड। जब 1/जेड हो जाएगा तो किस जेड की किस वैल्यू पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा जेड, तो वी पुट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो इसका फैक्टर होगा, दैट मीन सिंगुलर पॉइंट मिलेगा इसका, और सिंगुलर पॉइंट मिलेगा दैट मीन समथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। तो द फंक्शन, तो वी कैन से दैट डायरेक्टली, तो एट जेड इज इक्वल टू जीरो, द फंक्शन द फंक्शन एफ जेड सीज टू बी एनालिटिक, सीज टू बी एनालिटिक, मतलब z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो फंक्शन विल बी एनालिटिक, क्योंकि उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें यही पॉइंट निकालना था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ z, सो मीन्स द वैल्यू ऑफ z वी कंसीडर एज जीरो, तो एट z इक्वल टू जीरो द फंक्शन एफ जेड सीज टू बी एनालिटिक, so answer is z equal to 0. So answer is z equal to 0. So the value of z is 0. At 0 function cease to be analytic. Analytic नहीं होगा। ओके, cease to be ना खत्म हो जाना, रोक देना, और we can directly say that. Now second part is z is equal to sin u cos hyperbolic v plus I cos u sin hyperbolic v. So we solve this. So we write down the solution of this. So here we write down as given that z की वैल्यू दे रखी है, z इज इक्वल टू साइन यू इंटू कॉस हाइपरबोलिक v प्लस आयोटा कॉस यू इंटू साइन हाइपरबोलिक v, साइन हाइपरबोलिक v। अब साइन हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन, अब जैसे कॉस हाइपरबोलिक v है, तो वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक v वी कैन राइट डाउन एज कॉस आई वी। Okay, for sine hyperbolic, that means we write down as for sine hyperbolic v, the value of sine hyperbolic v, sine hyperbolic v is equal to minus iota sin I v। इसे कह सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, sin iota v is equal to I sin hyperbolic v, मतलब कोई भी फॉर्मूला। तो these are the relation between trigonometrical, so that we can write in hyperbolic function. So here we put the value of cos hyperbolic v or sin hyperbolic v. So this we can write down as z is equal to sin u or cos hyperbolic v. We write down as cos iota v or plus iota, or here we write down as cos u, and the value of this sin hyperbolic v, sin hyperbolic value is, so we write down minus iota or sin iota v. So now we write down this as sin u cos iota v, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस यू इंटू साइन आयोटा वी। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, मीन साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। So that means we can write down this as sin a plus b, sin a plus b का फॉर्मूला। तो ये हमारा साइन ए हो गया u और b हो गया हमारा आई वी। तो दिस वी कैन राइट डाउन एज साइन a प्लस बी, तो u प्लस आयोटा v, तो u प्लस आयोटा v वी कैन राइट डाउन दिस एज w। तो वी हैव w इक्वल टू एफ जेड और एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, और u प्लस आयोटा वी को हमने w लिख दिया, और ये किसके इक्वल चल रहा है, z के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, दिस इंप्लाइज w इक्वल टू साइन इनवर्स z, और साइन इनवर्स z। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, और डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या होगा,
डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स जेड का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - z²। सो एट व्हाट वैल्यू ऑफ जेड द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पर जब जो रूट देखेंगे तो ये है z², 1 - z², तो दैट मीन जेड गिव्स अस +-1। तो जेड गिव्स अस +-1। सो द वैल्यू ऑफ जेड is equal to +-1 dw upon dz does not exist. That means function does not exist, so that means function is not analytic at +-1. So the function, the derivative exist नहीं करेगा, not analytic at z equal to +-1. So these are the values of z, +1 and -1. Now we move to the next problem. Based on analytic function. Problem 2. Now we have show that the function, problem statement is show that the function fz is equal to xy plus iota y is everywhere continuous, is everywhere continuous but not analytic, but not analytic. फंक्शन कंटिन्यूअस है बट एनालिटिक नहीं होगा. तो हाउ टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? So we write down as given that function fz equal to xy plus iota y. So xy plus iota y. Now fz क्या होता है हमारा? We write down w, और w equal to u plus iota v. So here we write down fz equal to w equal to iota v और xy और plus iota y. So we equate the real and imaginary part. So u equal to xy or v equal to y. So when we use the CR condition, so what is the value of del u upon del x? Y. Del v upon del y? 1. And del u upon del y? X. And del v upon del y? Del v upon del x, sorry, 0. Del v upon del x is equal to 0. So ux equal to vy. ux equal to vy. तो ux तो हमारा y आ रहा है और vy 1 आ रहा है, तो फंक्शन दैट मीन सीआर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो हियर वी कैन से दैट del u upon del x is not equal to del v upon del y, and del u upon del y is not equal to minus del v upon del x. So we can say that CR conditions not satisfied. So hence CR conditions are not satisfied, not satisfied. So then the function fz is not analytic, और फंक्शन आप देख रहे हैं कि u एक्स वाई है, v y है, तो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा फंक्शन. तो एंड u एंड v both are continuous function, both are continuous function, क्योंकि फंक्शन हमें किसकी फॉर्म में दे रखा है? पॉलिनोमियल फॉर्म में. पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन.
और ये समझ लो जिसके डिनोमिनेटर में हमें 1 दे रखा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा बट सी आर सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। नाउ we move to the next question. Next question, similar question. The statement of next question is problem number 3. So that the function, so that the function fz is equal to sin x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y is continuous, as well as analytic, as well as analytic everywhere. Now we solve this problem. अब फंक्शन यहाँ पे भी देखो हमें शो करना है कि वो कंटिन्यूस होगा और एनालिटिक होगा एवरीवेयर। तो हाउ टू सॉल्व दिस? तो सेम दैट मीन्स वी राइट डाउन एज गिवन दैट फंक्शन हमें दे रखा है एफ जेड, और एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? यू प्लस आयोटा भी लिख दिया। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई और प्लस आयोटा cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो u क्या हो जाएगा? साइन x और cos हाइपरबोलिक y, और v क्या हो जाएगा? cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो वी अप्लाई द सी आर कंडीशन। तो डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, डेल u अपॉन डेल एक्स, और डेल v अपॉन डेल y, और v को y के रेस्पेक्ट करना है तो ये cos x तो कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक y डिफरेंशिएशन इज cos हाइपरबोलिक y। नाउ डेल u अपॉन डेल y, u को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x तो कांस्टेंट हो जाएगा और cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। नाउ डेल वी अपॉन डेल एक्स, और वी को एक्स से रेस्पेक्ट करना है, वी को तो cos एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई वी ट्रीट एज कांस्टेंट। तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, अब देखिए cos एक्स और cos हाइपरबोलिक वाई, cos एक्स cos हाइपरबोलिक वाई, और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स साइन हाइपर। अब आपको डिफरेंशिएशन पता होंगे, साइन और cos के डिफरेंशिएशन में, हाइपरबोलिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन नहीं आता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक एक्स होता है और cos हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो सी आर कंडीशन सेटिस्फाइड, सी आर कंडीशंस satisfied and function is analytic. So then the function is analytic, और जब फंक्शन एनालिटिक होगा तो फंक्शन एफ जेड ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन एनालिटिक है तो द फंक्शन एंड द फंक्शन एफ जेड इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। तो एनालिटिक होगा और कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस में डेरिव उसके डिनोमिनेटर नहीं है, और फंक्शन विच है कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। Okay, so hope you understand the question based on analytic function.